Am I audible? Slide visible? Yes. Okay. So let's begin with the class. So today's topic is Ayurvedic concept of treatment, and we will be looking at the some common elements, or you could say what you have to do where in day to day life or lifestyle related common elements which we a lot of us have been suffering from. ओके, तो आज हम लोग आयुर्वेद में चिकित्सा कैसे किया जाता है या फिर चिकित्सा पद्धति कैसे है वो देखेंगे, और कुछ जो डे टू डे छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं उनका हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे. Okay. So in Ayurveda, the Ayurvedic treatment or the Ayurvedic concept of treatment is very vast. Okay. And it is very, very, you could say, very, unique, because each and every treatment or each and every treatment of an individual for an individual is customized or tailor made. Okay. जो भी हम लोग चिकित्सा या फिर जो भी हम लोग चिकित्सा ही आप बोल लो, कोई भी इंसान का कोई भी अगर व्याधि है और उसका चिकित्सा जब हम लोग आयुर्वेद में देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा यूनिक होता है, क्योंकि हम लोग वो जो ट्रीटमेंट प्लान है, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो क्या प्रोसीजर्स हो, कुछ भी अगर हो, तो वो इंसान के लिए स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड क्रिएट करते हैं. ओके, बनाते हैं. तो so we don't have something called as general line of treatment. ऐसे जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है आयुर्वेद में. ठीक है, जो भी हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं या फिर चिकित्सा करते हैं वो हर इंसान के लिए अलग रहता है, और अलग इन द सेंस प्रोसीजर या फिर जो वे मेथडोलॉजी है वो सही सेम हो सकता है, लेकिन जो दवाई हो जाए या फिर कौन से टाइम पे क्या देना है, कैसे देना है, या फिर कौन सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिफर करती हैं. ओके, नाउ इन आयुर्वेदा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट concept of treatment, okay, concept of treatment, then this concept of treatment is, you could say, very very different, because we have multiple or innumerable concept of treatments. Okay, we have something called as dravya chikitsa, adravya chikitsa. Again, in adravya chikitsa we have something called as daivi vyapashraya chikitsa. Okay, we are using you know anything and everything for treatment. जब हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं तो हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे चिकित्सा पद्धति है, जैसे कि द्रव्य है, अद्रव्य है. अद्रव्य में भी दैवी व्यापश्रय चिकित्सा बोल के है. तो जब हम लोग आयुर्वेदा ट्रीटमेंट या फिर चिकित्सा पद्धति देखते हैं तो फिर हर एक चीज को हम लोग चिकित्सा या फिर ट्रीटमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, नाउ something a bit about Daivi Vyapashraya Chikitsa. Daivi Vyapashraya Chikitsa is where the treatment, is adravya or without any medical, I mean, like the medicines are not used in this form of treatment, and this is moreover a supportive treatment. Okay, here the treatment aspect is moreover about home, havan, puja, mantra jap, crystals, gems, colors, or pressure points. In this way, not only pressure, not pressure points as such, but moreover, it is about charity, about alms giving, uh, lot of things which are
uh, here, if at all you see, these are treatments or these are therapies used as a supportive along with the medicine and medical intervention, wherein moreover in psychosomatic disorders, you know, psychosomatic disorders or your mental illness or psychological illness, emotional illness, in these treatments or in these kind of issues, these Daivi Vyapashraya Chikitsa is added as a supportive treatment. Okay, जब हम लोग दैवी व्यापश्रय चिकित्सा के बारे में बात करते हैं, बेसिकली दैवी व्यापश्रय चिकित्सा जो है वो पूजा पाठ, हवन, होम, मंत्रोच्चारण, मंत्र जाप, नाम स्मरण, ये सारी चीजें होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा क्रिस्टल कलर, यू नो, और आपके जो जेमस्टोन्स है इनका धारण करना या फिर दान धर्म करना, ये सारी चीजों को यू नो बताते हैं. ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा मानसिक व्याधि में एज अ एडिशनल सपोर्टेड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जाता है. नयना जी, यस, क्रिस्टल्स एंड प्रेशर पॉइंट्स एंड ऑल आर a part of Ayurveda. We are using gemstones, you know, crystal gem therapy is there, crystal therapy is there, pressure points, marma therapy. In marma therapy we have a lot of pressure points and stuff like that. तो जैसे मैं बता रही थी, ये सारी चीजें मानसिक व्याधि या फिर यू नो जो मानसिक चिकित्सा में ये एडिशनल यूज किया जाता है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, मानसिक चिकित्सा में ये इस्तेमाल किया जाता है एज अ एडिशनल थिंग. इवन साउंड, मंत्र और स्पेसिफिक sound healing, even sounds are you know said, a lot of things, you know, these all come under Daivi Vyapashraya Chikitsa. Now the logic behind this is, moreover, I could say it is moreover the energy exchange or the energy shift or you know, which helps in creating that balance in our body, or you could say you know, सात्विक जो नेचर है या फिर सात्विक गुण जो है वो बढ़ाते हैं. बढ़ाने से जिससे यू नो ज्यादा से ज्यादा जो मानसिक व्याधियां हैं वो घट जाते हैं. बेसिकली वहां पे रजस और तमस गुण घट जाएंगे तो सात्विक गुण बढ़ जाएगा. जब सात्विक गुण बढ़ जाता है तो फिर ओवरऑल यू नो जो मेंटालिटी है या फिर ओवरऑल जो मनस को रिलेटेड या फिर यू नो साइकोलॉजिकल रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है वो कम हो जाते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग हियर, मोर ओवर इट इज यू नो regarding the energy shift or energy change, energy exchange you could say, wherein you know with these things the sattvic guna of the mind increases and rajasic and tamasic guna of the mind decreases, or they come you know they come down, they come very down. And when the sattvic guna increases, then it has an overall healthy effect on the body. Okay, so this is something like that. Now coming to dravya chikitsa, or you could say जो चीजें होती हैं, जैसे कि यू नो जो मेडिसिन लेके या फिर मेडिसिन इंटरवेंशन से जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया जाता है उसको हम लोग द्रव्य चिकित्सा बोलते हैं. फिर उसमें कैसे हम लोग क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं. So in Dravya Chikitsa, we use a lot of medicines in terms of not only herbs, but also, you know, metals, minerals, natural elements, and a lot of things. तो जब हम लोग द्रव्य चिकित्सा देखते हैं तो हम लोग फल फूल पौधे मेटल मिनरल्स ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं. तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट इज निदान परिवर्जन. Okay, Nidana parivarjana is something wherein you withdraw yourself or you give up the or you are away from the causative factor which is causing the diseases.
निदान परिवर्जन मतलब ये है जहाँ पे जो कारण है, व्याधियों का जो कारण है, मूल कारण जो व्याधि उत्पन्न करता है, उस मूल कारण से आप दूर रहिए या फिर उसका त्याग दीजिए, उसका मतलब है निदान परिवर्जन. सो बी अवे फ्रॉम द causative factor. And this is very effective, or you could say this is helpful when the person is having, slightly increased doshas, or slightly if the disbalance is very in the beginning, or very recent, and it is very in less quantity. So with the nidana parivarjana and proper diet and lifestyle, the disease can be elevated, or it can be cured, treated. निदान परिवर्जन का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब जो डिसीज है या फिर जो व्याधि है वो अभी हाल ही में शुरुआत हुई है उसकी, और बहुत कम मात्रा में है, और अभी हाल ही में शुरू हुई है. तो वैसे चीजों में निदान परिवर्जन, जहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर या फिर जो कारण है उससे आप दूर रहोगे, और एट द सेम टाइम आप प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करने से आप वापस स्वस्थ बन सकते हो. नाउ इफ एट ऑल द elements or ailments or your diseases are not cured by nidana parivarjana, or they can't be controlled with just the nidana parivarjana, then the next step is the shamana aushadhi. Shamana aushadhi is moreover a oral intake medications or palliative care, that's what we call it. Palliative care or oral intake, oral introduction of the medicine is moreover wherein you utilize a lot of medications orally as well as externally in order to take care of the disorder. जो शमन औषधि है जो वो हम लोग इंटरनली भी लेते हैं और बाहर एप्लीकेशन के लिए भी देते हैं, जहाँ पे व्याधि जो है वो निदान परिवर्जन या फिर पथ्य मतलब प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करने से जब वो पॉसिबल नहीं होता या फिर वो कम नहीं होता, तो हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं. तो दवाइयों का इस्तेमाल हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जगह पे करते हैं, जहाँ पे बेसिकली जो डिसीज है वो कम हो जाता है. ओके, जब इससे भी नाकाम बने, when even this doesn't help, when even the shaman aushadhi are not that helpful, or the diseases are not created, then the next line of treatment is the shodhana or panchakarma therapy. Panchakarma are the five you could say five line of treatment, or five treatment procedures which are very very important to cleanse the body or take out the toxins from the body in terms of which is causative factor for the diseases. So wherein your diet, lifestyle, your medicines are not that beneficial. Here the vyadhi or the disease is very elevated, or it has come to a very high place. So that is the reason you have to clean it out, or you have to flush it out of the body. You have to literally scrape and remove it from the body. That is possible through the shodhana therapy or panchakarma therapy. पंचकर्मा मतलब शोधन थेरेपी, जहाँ पे जब व्याधि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा पीक पे आ जाता है, तो जहाँ पे दवाई या फिर दवा दारू की असर नहीं पड़ रहा है, तो उस टाइम पे वो व्याधि का जो कारण है, जो आम है या फिर टॉक्सिन्स जो है, उसको हम लोग को खुरेद के या फिर उसको बाहर खींचना पड़ता है. तो उस टाइम पे ये पंचकर्मा या फिर शोधन थेरेपी का इस्तेमाल होता है. नाउ these are Vamana, Virechan, Vasti, Nasya, Raktamokshan. वमन ये जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, तो वमन इज इंड्यूस्ड एमेसिस और वॉमिटिंग. वमन मतलब उल्टियां करवाना, उसको हम लोग दवाई वगैरह देके उनसे उल्टियां करवाते हैं, इसको हम लोग वमन चिकित्सा बोलते हैं. Then we have something called as Virechana. Virechan जहाँ पे is something wherein we give the medicine and induce loose motions or diarrhea. विरेचन जो है वो दवाई देके जुलाब लगवाते हैं, जहाँ पे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं.
बस्ती अगेन एनीमा, इसमें भी गुदा मार्ग से इट इज वन थ्रू द एनल एंड द अदर इज यूट्रोजेनाइटल, दैट इज इन योर इन योर ग्रॉइन रीजन और इन द थ्रू द जेनाइटल। ओके, बस्ती मेडिकेटेड एनीमा है या फिर बस्ती है जो गुदमार्ग से या फिर आपके जेनाइटल से दिया जाता है। नस्य अगेन इट इज द नेजल, जहाँ पे नस्य मतलब नाक में nasal drops is being given. Raktamokshana bloodletting, okay, जहाँ पे खून खून निकालते हैं उसको हम लोग रक्तमोक्षण बोलते हैं। नस्य जहाँ पे नाक में हम लोग ड्रॉप्स वगैरह जो भी दवाई है वो नाक के थ्रू देते हैं। नाउ something bit in detail about panchakarma. Can we keep the questions at the end of the class? Yeah, because we have a lot of topics. So all the questions end of the class. Yeah, thank you. Yeah, now coming to Vamana, before going this, all these panchakarma therapies have a specific routine or procedure, something called as pre-procedure, purva karma. ये सारे अनुपमा जी, आई एम गोइंग टू गिव इन डिटेल अ बिट, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल. Here panchakarma is again have a specific procedure, okay, something called as pre procedures, that is purva karma. Then we have something called as pradhana karma, that is main procedures, and paschat karma, that is post procedures. Okay, so this is being given in this format. Now what is purva karma? In the purva karma we are giving दीपना पाचन. ओके, नाउ व्हाट डज दीपना पाचन डू? पूर्व कर्म में हम लोग पंचकर्मा देने से पहले पूर्व कर्म का पूर्व कर्म देते हैं. पूर्व कर्म क्या है? जहां पे हम लोग दीपन और पाचन बढ़ाते हैं. नाउ दीपन इज digestive fire, that is you include, or you could say we increase the digestive fire of the person by giving medications before the meals. Okay, before the meals the medications are given in order to increase the digestive fire, and we are giving pachana drug medications after the meal, post meal, in order to increase the metabolism. Okay, metabolic fire you could say. So in this way for 3 days we are giving digestive fire increase enhancing medications and metabolic fire enhancing medications before and after food. And again it varies, the medication varies based on the prakriti, bala, vaya, and lot of things. जो पूर्व कर्म है वहां पे दीपन पाचन करवाते हैं. दीपन जो है वो आपके खाने का जो अग्नि है वो बढ़ाता है, और जो डाइजेस्टिव फायर हम लोग जो बोलते हैं. पाचन मतलब जो खाने को पचाने के लिए जो अग्नि की जरूरत होती है उसको बढ़ाता है, मेटाबॉलिक फायर. ओके, तो फिर यहाँ पे खाने से पहले दीपन का दवाई दिया जाता है, और खाने के बाद पाचन का दवाई दिया जाता है. लगभग 3 दिन के लिए दिया जाता है. तो दिस कंप्लीट्स योर पूर्व कर्म. नाउ कमिंग टू प्रधान कर्म. इन द प्रधान कर्म वी आर गिविंग समथिंग कॉल्ड एज snehapana. Okay, snehapana is there, or snehana is there, then swedana is there, that is steam, and on the last at the end it is the actual procedure. Okay, तो जब हम लोग प्रधान कर्म बोलते हैं तो प्रधान कर्म में पहले स्नेहपान होता है, फिर स्वेदन होता है, उसके बाद जो है वो एक्चुअल कर्म होता है या फिर एक्चुअल प्रोसीजर होता है. तो स्नेहपान क्या है? स्नेहपान इज समथिंग wherein we are, what is snehapana? Snehapana is we are giving medicated ghee, which is being processed with a lot of herbs to drink orally in the morning, early morning. So it starts somewhere between for 3 days or 5 days, 4 days, 5 days, based on different criteria. We give that according to the patients. And then there is something called as Svedana after the Snehapana, which could be somewhere between 3 to 5 days. Then we give 2 to 3 days of Abhyanga and Svedana. Abhyanga is body massage, oil body massage, and steam. Okay, and on the last day, after the body massage and steam, we are giving them medication which causes the panchakarma therapies. In जब हम लोग
प्रधान कर्म करते हैं तो मेडिकेटेड घी या फिर दवा जो हर्ब्स वाले रहते हैं वो घी को बहुत ज्यादा हर्ब्स डाल के उसको प्रोसेस करने के बाद उसको पीने देते हैं सुबह के टाइम पे। तो वो हम लोग 3 दिन दे सकते हैं, 4 दिन दे सकते हैं, 5 दिन दे सकते हैं, बेस्ड ऑन मतलब कुछ कुछ क्राइटेरियाज है, वो सारा हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद 2 से 3 दिन तक हम लोग स्वेदन देते हैं, जहाँ पे बॉडी मसाज होता है और स्टीम दिया जाता है। और लास्ट डे पे बॉडी मसाज और स्टीम के बाद दवाई दिया जाता है, जिससे उनको जो भी पंचकर्मा होता है वो करवाते हैं। ओके, now Vamana is we are giving medication after the purva karma and all the stuff, Snehan Svedan. We are giving them medications which is to be taken in order in kafaja vyadhis. All the kafaja vyadhis, the best line of treatment is Vamana, wherein early morning 5:30 or so we give them medications, and from in the kafaja kala, that is from 6 to 10 in the morning, they end up having a lot of vomiting. Okay, Vamana is vomiting, induced vomiting, which could range from somewhere between 10 to 30 times. Okay, so this is called as Vamana karma, which is very used in kafaja vyadhis. Next, in the Virechana, that is purgation, we give it in the medicine is being given at the time somewhere between 9:30. So by 10 o'clock, when the pittaja kala starts, the diarrhea or loose motion starts. Okay, so Virechan is induced diarrhea or loose motions, which starts from 10. Again, it ranges from 10 to 30 times, and by 2:30 in the afternoon, they start decreasing. The frequency starts decreasing. Okay, and this is very commonly given in pitta javyadis, all pitta related disorders. Now Vasti is again after this enema is given either through the anal region or the uterovaginal region, or your genitals, through the genitals, and very commonly given in vataja related disorders. Okay, but of course we have other things also, but vataja is very common. Then we have something called as Nasya, wherein the nasal drops are being given in the nose. Okay, Shodhana Nasya, very commonly used in throat, mouth, ENT, and brain related disorders. Now, ENT and brain related disorders, here we are giving them a lot of in the powder form, in the juice form, drops in the nose for 7 to 8 days. First we are doing massage, then nasal drops, then massage, and then steam, and then dhumapana, cigarette smoking, gagging, all these things are done for continuous of 7 to 8 days. And last is the Raktamokshana. Raktamokshana, here again we are using syringe to draw the blood. Okay, the toxic blood you could say, or the bad blood. And then we have something with the scalpel set, scalpel vein set, SV set, what it is called. It has a small needle and then butterfly shaped needle, and then a small pipe is there. Okay, you might have seen in very commonly used in the saline and all. So we use this, and in this way we draw the blood. It could be very commonly you take out the blood or do the bloodletting procedure in the brachial arteries. Okay, that is present, which is present in your arm, that is at the elbow arm, elbow. And the last but not the least is the leech therapy, wherein at a specific region locally we apply the leeches so that they plant themselves or they catch hold of the area, and once they drink all the toxic blood or toxic blood, and after that it kind of lets go. Okay, so this is what is called as Raktamokshana, bloodletting. Okay, तो वमन जो है वो सारे Raktamokshan, again we are using it in lot of local related disorders, blood related, skin related, any specific pain. If in these kind of things we are using Raktamokshana, where it is localized at a specific area. Okay, yes. वमन जो है वो कफज व्याधियों में करवाते हैं, जहाँ पे पूर्व कर्म और स्नेहन स्वेदन होने के बाद सुबह के टाइम पे, मतलब कफज काल शुरू होने से पहले सुबह 5:30 बजे दवाई देते हैं, और 6 बजे से 10 बजे तक बहुत ज्यादा उल्टी होते हैं, 10 से 30 बार तक उल्टियां होती है। ठीक है,
और इसमें हम लोग सारे जो कफजर रिलेटेड व्याधि है उसमें ये दिया जाता है। विरेचन जो है वो पित्तजर रिलेटेड व्याधियों में दिया जाता है, जहाँ पे हम लोग दवाई 9 साढ़े 9 बजे से देना शुरू करते हैं। तो 10 बजे से उनको लूज मोशन शुरू होता है और 2 बजे के बाद धीरे धीरे कम होते जाता है। पित्तजर व्याधि में देते हैं। देन बस्ती जो है वो उत्तर बस्ती या फिर गुदम बस्ती होता है, जो हम लोग वात रिलेटेड डिसऑर्डर्स में बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में देते हैं। लेकिन वात रिलेटेड जो है वो उसमें बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। ओके। फिर है नस्य, जहाँ पे नाक में हम लोग दवाई देते हैं 7 से 8 दिन तक, जहाँ पे पहले मसाज किया जाता है, फिर स्टीम दिया जाता है, फिर नेजल ड्रॉप्स डालते हैं, फिर मसाज करते हैं, स्टीम देते हैं, फिर बाद में धूम्रपान या फिर जो गार्गलिंग वगैरह रहता है वो सब करवाते हैं। यहाँ पे जो दवाई है ये चूर्ण चूर्ण भी हम लोग डालते हैं, स्वरस हम लोग डालते हैं, मतलब कोई पत्तों का जूस वगैरह डालते हैं या फिर तेल डालते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। रक्तमोक्षण, रक्तमोक्षण जो है वो खून निकालना होता है। पहले सिरिंज से हम खून निकालते हैं, या तो फिर वो स्कैल्पल वेन सेट बोल के मिलता है, सलाइन की तरह छोटा सा इतना ही सुई रहता है और पाइप रहता है छोटा सा, तो वो डाल के खून निकालते हैं। या तो फिर आपका जलव का इस जोंक जो हम लोग बोलते हैं, लीच हम लोग जो बोलते हैं, जो लोकलाइज्ड एरिया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या फिर लोकल एरिया में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, दर्द है वेरिकोस वेन में, स्किन डिसऑर्डर्स में, वो हम लोग देते हैं। जहाँ पे जो लीच है या फिर जोंक जो रहता है उसको हम लोग रख देते हैं, तो फिर वो काट के पूरा जो दूषित रक्त है वो पहले पी लेता है, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है वो अपने आप छोड़ देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रक्तमोक्षण बोलते हैं। Now, yes, coming to Patya Apatya. Patya Apatya is something called as do and don'ts, wherein we have specific, diet, lifestyle, and emotions which you should do and which you should not do according to some of the disorders or according to the prakriti or according to the doshas. पत्य अपत्य भी एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक चीजों में कुछ चीजों को करने बोलते हैं और कुछ चीजों को मना ही है, जैसे कि आहार विहार और मानसिक, इन तीनों के हिसाब से हम लोग बताते हैं। डिसीज इन सबको मायने में ध्यान में रख के बताया जाता है। नाउ कमिंग टू सम कॉमन एलिमेंट्स, बहुत कॉमनली जो चीज दिखाई देती है बहुत सारे लोगों में, वेरी कॉमनली, pains, that is musculoskeletal pains, rheumatoid arthritis. Now we will see some common elements, some common elements, wherein which are being dealt or which are being seen in everyday, every person's day to day life. It could be moreover you can say these are the your lifestyle related disorders. Pains, musculoskeletal pains, rheumatoid arthritis, headache, obesity, diabetes mellitus, hypertension, skin problems, gastric troubles, hypothyroidism, PCOS, respiratory problems. Okay. So before starting, what I want to know from each one of you, from everybody, there are slides wherein all the matter has been given. Okay, so I don't want to go go through the slides and all, rather than that I'll just give you some additional information which you can do, or some additional remedies or stuff like that which you can do in your day to day life. Okay, if that is okay, let me know. Otherwise if you want to just go with the slides. यहाँ पे जो स्लाइड्स है, स्लाइड्स में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है जो आपको मिल जाएगा, तो आपको वही स्लाइड्स से ही पढ़ के बताना है, या तो फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है जो आप डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकते हो. ओके, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. Okay, we have a lot of people who are saying additional extra information. Okay, so yes, I'm not going to go through the slides. Okay. Yes, in the first, musculoskeletal disorders, when we are talking about musculoskeletal disorders, here the involvement of muscles and skeleton is your bones. Okay, muscle and bones are involved in
XYZ डिसऑर्डर्स। ओके, जब हम लोग मस्कुलोस्केलेटल की बात करते हैं तो मांस और आपकी अस्थियां या फिर जो हड्डियां हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसकी वजह से दर्द जो भी है वो होता है। Some of the common examples are RA, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, cervical spondylitis, osteoarthritis, lower back pain. Then you have gouty arthritis. Then you have, a lot of arthritic related disorders or inflammations, localized inflammations and stuff like that. तो जो कॉमन डिसऑर्डर्स है, रिमेटेड आर्थराइटिस, ये सारी चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सूजन आना, दर्द करना, ये सारी चीजें जो है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में आता है। नाउ यस, नाउ यहाँ पे क्या होता है, what happens here now, what is the, because of improper ahara vihara manasika karanas or nidanas or causes, the vata vruddhi or the vata gets disturbed. Okay, it gets increased or disturbed, leading to again at the same time kapha dosha. Okay, kapha dosha also gets disturbed, and when this happens, all the pain related or the ama formation is there, which goes and gets deposited in the specific joints or specific muscles, causing to lot of pain or disturbance. जब हम लोग बहुत ज्यादा आहार विहार मानसिक जो जस्ट अ मिनट, जब हम लोग आहार विहार मानसिक जो विरुद्ध है वो चीजें करती है, जिससे हमारा वात और कफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आम का उत्पत्ति होता है। और ये आम जब यहाँ वहां घूमती है या फिर यहाँ वहां जाके फंस जाती है, रह जाती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होके दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। ओके, तो दिस इज व्हाट हैपेंस और दिस इज हाउ द कॉज एंड द थिंग्स हैपन। नाउ here you have what is the Shodhana. Okay, Vasti मात्रा, Vasti है, अभ्यंग, नाड़ी स्वेद वगैरह वगैरह है, totally, or herbs, list of herbs has been given, what you should do and what you shouldn't do has been told. Okay, yes, now I'm going to tell you how to prepare pain oil, general common pain oil. Okay, the best pain oil which you can prepare right at your home. I'll not repeat. Please listen to this very carefully. I'm not going to repeat this again and again. Three oil are very, very important, which are easily available in each and every household. Okay. Sesame oil, that is til ka tel. Castor oil, erand ka tel. Mustard oil, sarson ka tel. Til ka tel, sarson ka tel, castor ka tel, erand ka tel. Sesame oil, mustard oil, and castor oil. These three oils to be taken. Okay, keep it, mix them and keep it. No proportion and all. Just whatever is required, you can use it. So you are taking all these three oils. Now you're going to use some herbs. Now, what all herbs you can use? Very commonly, you can find ginger, garlic, onion. Okay. हर घर में अदरक, लहसुन और आपका प्याज मिल जाता है, तो ये तीनों चीज आप ले सकती हो। इनको आप ज्यादा से ज्यादा स्मैश कर लो, अच्छे से उनको कूट लो, मतलब बहुत ज्यादा पेस्ट की तरह नहीं बनाना है, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा ऐसे कूट लो ताकि वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए। जस्ट मैश देम, यू डोंट हैव टू ग्राइंड देम और एनीथिंग, you can just mash them. Okay, now what you have to do, you have to take the spices. Now which all spices you can take, आपको फिर बाद में अभी थोड़े से मसाले लेने हैं। जीरा, cumin, black pepper, काली मिरी, then you have ajwain, caraway seeds, clove, long, then haldi, turmeric. Okay, and yeah, you can also use like methi seeds, that is fenugreek. Okay, methi dana, fenugreek seeds you can use.
Okay, all this you take and keep them again, slightly just bang them, हल्का सा उनको थोड़ा सा ऐसे कूट लो। तो ये जो तेल है, ये आप पूरा तेल डाल सकते हो, जितना भी आपने लिया है वो पूरा डाल सकते हो, या तो फिर थोड़ा सा तेल लो और डालो उसमें। अभी आपको ये सारे जो हर्ब्स है वो डालना है, जैसे आप छौंक डालते हो वैसे आपको डालना है, और अच्छे से उसको धीमी आंच में उसको जब तक वो पूरा फ्राई नहीं हो जाता है उसको आपको फ्राई करना है। फ्राई द ginger garlic onion properly till they turn almost almost like your golden brown, okay, golden brown, but not, they are not burnt, उनको जलाना नहीं है, उनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन के तक उनको भूनना है। इसके बाद इसमें आप डालो आपके सारे जो मसाले आप हमने बोले वो सारे मसाले डाल दो। ओके, put all the spices in them now, again slowly saute them till they become big and this. Now let this cool, okay, let this oil cool and strain it, okay, strain it, filter कर लो, फिर उसको छान लो। Now you can now this oil is ready. To this you can add essential oils, very good essential oils for all inflammation, pain killers, relaxation, soothing of the muscles and stuff. Lavender, rosemary, sage, patchouli. I repeat, lavender, rosemary, sage, patchouli. ये चारों एसेंशियल ऑयल्स उस ऑयल में आप ऐड कर सकते हो। ओके, बाद में इस ऑयल को आपको ग्लास के बॉटल में रखना है। यू हैव टू स्टोर दिस इन अ ग्लास बॉटल बिकॉज इट इज वेरी वेरी पोटेंट और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव। सो इफ यू कीप इट इन दी your plastic bottle, the change of the shape of the plastic bottle can be seen, so keep it in the glass bottle. Okay, now what you have to do is you have to use this in very little quantity just on the affected areas, in any kind of pains on the body. Okay, just apply gently, don't rub it. Also see that if at all, because the oil is very hot in potency and very aggressive, some people might have slight burning. So if at all that happens, for them take the oil separately and add a bit of sesame oil in a little extra quantity so that it becomes slightly less potent, and then you can apply it. Okay, जो ये तेल है बहुत ज्यादा तीक्ष्ण या फिर उग्र हो जाता है, तो फिर आप जब लगाते हो तो ध्यान रहे कि आप ज्यादा उसको घिस नहीं रहे हो, हल्के हाथ से आप उसको मल रहे हो। ओके, और कुछ लोगों का अगर स्किन सेंसिटिव है तो इस तेल से उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर ऐसे हो रहा है तो तिल के तेल में आप उसको डाल के आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आपको पोटली बनाना है। पोटली किस किस चीज से आप बनाते हो? अदरक, प्याज, लहसुन, हिंग, आपका हल्दी आप ले सकते हो, इसके साथ आप मोरिंगा लीव्स भी डाल सकते हो, ये ओके, कड़ी पत्ता भी आप डाल सकते हो। तो इनको आप थोड़ा सा पोटली की तरह बना के गरम तवे से इसको सेकना है, गरम तवे पे रख के फिर बाद में जहाँ पे भी डला हुआ है वहां पे आप सेक सकते हो। ओके, now you have to prepare a patra potli sweda. In potli what you have to use is ginger, garlic, onion and moringa leaves if you can get hold, or if at all just ginger, garlic and a little bit of asafoetida and your turmeric. Take this, make a bolus out of it in a cloth, cotton cloth, and then heat it or warm it on the pan, and then that with that give gentle massage on the affected area. Again, very very beneficial. So this is your pain oil, then patra potli, and there is something called as lepa, or you could say pichu, something like that. Here what you are doing is you are taking wheat flour and black gram flour. Okay, wheat flour and black gram flour, and you are adding hot water and making a duff out of it, and this duff can be used or applied on the affected area. Leave it for 15 to 20 minutes and then take it off, and then wipe it with hot water. इसके बाद आपको लेप की जरूरत पड़ती है। तो लेप आप क्या किससे बना सकते हो? गेहूं के आटा और उड़द दाल की आटा, उड़द दाल का जो आटा है उसको उसमें गर्म पानी डाल के अच्छे से उसको ये कर लीजिए, मतलब आटे गोला बना लीजिए।
फिर ये जो गोला है आप गरम गरम ही उसको आप जहाँ पे भी आपको दर्द वगैरह है वहां पे आप रख सकते हो। 15-20 मिनट के बाद आप उसको निकाल के हल्के से गर्म पानी से आप उसको पोंछ सकते हो। ओके, तो ये आपका प्रोसीजर है। कहीं पे भी बॉडी में आप जो भी दर्द वगैरह है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रहे अगर जलन हो रहा है, बहुत ज्यादा जलन हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा दर्द जो है और तेज हो रहा है, तो इंस्टेंटली ये बंद कर दीजिए। ओके, if at all the person is not uncomfortable, or if the pain is increasing, stop it instantly. If the person has a lot of burning sensation or allergy kind of thing, instantly stop it. If at all the pain is worsening, then instantly stop it. Okay, because if at all because it is very hot producing, then if at all pitta and all are there, then it worsens the condition. Okay. um Yes, rheumatoid arthritis again, Vata and Vata kapha are involved. Okay, again, armor formation are there, and it goes and accumulates or gets deposited in the joints and bones, leading to deformity of the bone deformation, pain, swelling, shifting kind of pain and stuff like that. Sesame oil massage is the best. Apply whole body sesame oil every day, and in specific areas you can apply the pain oil, and then you can work on you can use that patra sweda. Okay, आप ये सारी जब रिमेटेड आर्थराइटिस है तो वात और वात कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जहाँ पे आम उत्पत्ति होके जो बोन्स है उनको डिफॉर्म कर देता है, या फिर उनको दर्द रहता है, सूजन रहता है, तो वहां पे आप तिल ऑयल का पूरा मसाज कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, और उसके बाद आप ये अगर स्पेसिफिक जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो ये जो तेल पेन ऑयल मैंने अभी बताया है वो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब वो पत्र स्वेद जो पोटली का स्वेद है वो आप दे सकते हो, बहुत ज्यादा राहत देता है। ओके, ऐसे ही आप वालू का मतलब आपका जो रेती है, या ओके, रेती जो है उससे भी आप ऐसे बना सकते हो, या तो फिर नमक का भी ऐसे पोटली बना के आप इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज सैंड, एंड ऑल्सो यू कैन यूज सेंधव लवण और योर रॉक सॉल्ट फॉर द पोटली। ओके, then you have a lot of medications here, what you should do, what you should not do. For inflammation and all, barley water with methi water, you can use it. Barley and methi water, very very beneficial in helping decreasing the inflammation. At the same time, ginger and your dry ginger, very very beneficial. Okay, very good, you can always eat them. Now coming to headaches, headache is again it could be because of the migraine, sinusitis, tension, stress, fever, secondary, a lot of things. Again, vata pitta is involved, or kapha is also involved. If at all it is migraine, then very commonly vata and pitta are involved. If at all it is sinusitis or heaviness and all, kapha is involved. Tension is again vata, tension, stress वाला headache. जो बहुत ज्यादा तेज दर्द रहता है, बहुत असहनीय दर्द रहता है, इफ एट ऑल इट इज अनबेरेबल, देन वाता इन्वॉल्वमेंट इज देयर। अगर हल्का सा जलन जैसा हो रहा है, गरम बहुत ज्यादा गरम है और जलन जैसा हो रहा है, चक्कर जैसे आ रहे हैं, तो पित्त इन्वॉल्वमेंट रहता है। इफ देर इज स्लाइटली बर्निंग सेंसेशन और वर्टिगो एंड ऑल, देन पित्त इज इन्वॉल्व। And if at all the pain is throbbing kind and it is heaviness, then it is kapha, because of the kapha. अगर बहुत सर बहुत भारी लग रहा है और धीमे से दर्द हो रहा है तो कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, हियर नस्य, शिरोधारा एंड ऑल आर देयर, शिरोधारा, शिरोबस्ती, शिरोपिच्छु, शिरोअभ्यंग, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, एंड सम ऑफ द यहाँ पे है, यहाँ पे। नाउ इफ एट ऑल इट इज वातज, वातज अगर है तो हल्का सा तेल अगर आप डाल के हल्का सा मसाज कर सकते हो, तिल ऑयल या फिर एरंड का तेल। इफ एट ऑल इट इज वात हेडेक, देन कैस्टर ऑयल और सेसमे ऑयल कैन बी यूज्ड फॉर हेड मसाज, slight gentle head massage and relaxing. Okay, if pittaja is there, then you can apply sesame oil with kapoor or camphor in it. Add camphor to the sesame oil and then apply it on the head, so that will take care of your this.
If at all it is migraine, you can always keep a hot cold water bag, or you could say ice pack on the back of your head. Okay. um Atika ji, I have already seen, I have told how to differentiate Vata, Pitta, Kapha headaches. Okay, in the just now. If at all there is intense headache, then it is Vataja. Okay, intense throbbing, a lot of head, intense throbbing, then Vata involvement is there. Then in Kaphaja, if at all it is Kaphaja, मतलब अगर Kaphaja सर दर्द हो रहा है, तो फिर what you can do is you can apply ginger paste to your head, or shunt, that is your dry ginger paste. Make a paste of dry ginger and apply it on the head, or you can add mix sanda salt or rock salt to the either sesame oil or mustard oil, and apply it to the head. Okay, even that will take care of your headaches. Apart from this, yes, breathing exercise, pranayama and meditation works wonders. Okay. Now coming to yes, again, apart from that, in sinus headaches, eucalyptus oil steam inhalation is very, very beneficial. Okay. Now coming to obesity, obesity is again because of vata and kapha vruddhi, which leads to ama or a lot of blockages or obstruction, leading to increased kledaka. Kledaka is your meda dhatu. Okay, leading to fat deposition in different parts of the body, called as obesity. ओबेसिटी या फिर स्थौल्य क्या है, जब वात और कफ आपका बढ़ जाता है तो आम का उत्पत्ति होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्लेद और मेदा धातु बढ़ जाता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ वहां जहाँ पे भी स्पेसिफिक जगहों पे जाके वो डिपॉजिट हो जाता है और मोटापा का निर्माण करता है. ओके, तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है यूजुअली वमन, विरेचन, बस्ती, अभ्यंग, उद्वर्तन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है. ओके, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी बेनिफिशियल इन ओबेसिटी. Apart from that, yeah, langan and all those stuffs, you have certain tablets and drinks and all. Yeah, honey water, very good. Throughout the day, hot water infused with ginger and methi, that is fenugreek, is very very good. Okay, sipping throughout the day is very beneficial. 30 minutes of minimum 30 minutes of exercise in the morning and in the evening is a must. Okay. Apart from that, yeah, look at your digestion and metabolism, correct it. Diet and lifestyle correction is very very important. आपका आहार विहार मानसिक का उसका करेक्शन करो, आपका दीपन पाचन का करेक्शन करो. ठीक है. Barley water is also very good. Okay, very good for flushing out. When you do all these workouts and all, the barley water will help in flushing out the toxins. Now coming to diabetes mellitus, that is especially type 2, again which is because of the excess fat या फिर बहुत ज्यादा मोटापे की वजह से जो होता है. One more thing in the obesity, buttermilk is a must. Okay, जो छाछ है वो कंपलसरी पीना है. ओके, बटरमिल्क जो है मतलब छाछ जो है मोटापे में बहुत ज्यादा काम करता है. Yes, now coming to diabetes mellitus, type 2 is moreover because of the obesity या फिर जो स्थौल्य है या फिर मोटापा है, सॉरी मोटापे की वजह से डायबिटीज जो आता है उसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज में कंसीडर करते हैं. यहाँ पे माइल्ड डिटॉक्स, उद्वर्तन, बस्ती दिया जाता है. माइल्ड डिटॉक्स और पाउडर मसाज और सॉरी enema is also very very beneficial. You have some of the herbs being given here, some of the things, lifestyle. Yeah, now what you can do is see that you're not following a sedentary lifestyle. मतलब एक ही जगह पे बैठ के आप चीजें ना करिए. बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह कीजिए.
a lot of exercise, yogasanas, breathing exercise, and pranayama and all. Apart from that, very commonly you can use your methi dana, that is fenugreek seeds, ajwain, caraway seeds, very very beneficial. Apart from that, गोवा लीव्स, अमृत, अमरुद जो है उसके जो पत्ते आते हैं, उन डिकॉक्शन ऑफ दैट, डिकॉक्शन ऑफ पेरीविंकल फ्लावर लीव्स, सदाफूली या फिर सदाबहार बोल के जो फूल आते हैं उसके पत्तों का कषाय लेना बहुत अच्छा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जामुन, जामुन सीड powder or jamun seeds are also very very beneficial in regulating your sugar levels. Okay, all these help in regulating your sugar levels. Yes, this is very common or important, I would say. Now coming to hypertension. Hypertension is again because of the excess vata and pitta which enters the rakta dhatu. Okay, when your vata gets increased, there's a lot of movement or hyperactivity, and the pitta is a lot of hotness, or you could say there's a lot of pressure on the vessels leading to hypertension. Okay, जब आप पित्तवर्धक, वात और पित्तवर्धक का आहार विहार करते हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका वात भी बढ़ जाता है, पित्त भी बढ़ जाता है, जिनके कारण आपका जो वेसल्स है उसमें बहुत ज्यादा तेजी से खून दौड़ने लगता है, जैसे कि खून खौल रहा है वैसे वाली चीज हो जाती है, और प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है. ओके, नाउ द बेस्ट वे टू रेगुलेट हियर इज ऑफ कोर्स यूज ऑफ रॉक सॉल्ट इन योर डाइट. ओके, very very best. Other thing is, you can take water off, you can prepare the water overnight, you have to just leave in the night. Coriander seeds, fennel seeds, fenugreek seeds, dalchini. Okay, dalchini, that is your cinnamon stick, along with your dried grapes or raisins, black raisins. Okay, put these very little 1/4 teaspoon or so in a glass of normal room temperature water, leave it over the night, and in the morning just macerate it, squeeze it properly, strain it and drink that water. Okay, जो धनिया बीज है, मेथी, सौंफ, दालचीनी और किशमिश, काले किशमिश, इन सबको थोड़ा थोड़ा करके एक ग्लास पानी में डाल के आप छोड़ दो, पूरी रात उनको उसी में रखो, और अगले दिन सुबह उनको अच्छे से मसल के उनको फिल्टर कर लो, और फिर बाद में वो पानी आप पी लो. ओके, सो दिस विल टेक केयर ऑफ योर हाइपरटेंशन, और इट रेगुलेट्स योर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर. एंड of course प्राणायाम, स्पेसिफिकली शीतकरी प्राणायाम जो है, या फिर भ्रमरी प्राणायाम, these are very very beneficial and important in hypertension. Okay. Now coming to skin problems. Again, skin problems here are because of a lot of disorders. Okay, वात पित्त कफ. वात जो है तो यूजुअली स्नेहन या फिर बस्ती बहुत अच्छा काम करता है. पित्त जो है तो विरेचन, रक्तमोक्षण बहुत अच्छा काम करता है, और कफ जो है तो वमन या फिर बस्ती बहुत अच्छा काम करता है, वमन उद्वर्तन बहुत अच्छा काम करता है. Okay, now वातज problems could be because of your eczema, then blemishes, or your psoriasis and PMLES. Okay, scabies, ringworms, there are a lot of things. Okay, again these are based on the doshas involved. We basically we consider the doshas rather than the names of those things. Anyway, now coming to what is the best, here what you can do is किशमिश और अंजीर का जो पानी है, रात को उसको भिगो के आप रख दो, और अगले दिन सुबह आप उसको पी लो. ओके, सो दैट हेल्प्स इन डायूरेटिक. अगेन बार्ली वाटर इज वेरी गुड. जो यव का जो पानी रहे हो पूरा दिन आप पी लो तो वो अच्छे से फ्लश कर देगा. ओके, बॉडी को. और मैक्सिमम फ्लूइड्स इनटेक इज अ मस्ट. बहुत ज्यादा पानी पीना. ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज कंपल्सरी. प्राणायाम इज कंपल्सरी. योगासना इज कंपल्सरी. ओके, स्किन डिसऑर्डर है या स्किन इशू है तो प्राणायाम, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा कंपल्सरी करना है. ओके, इफ यू हैव एनी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स,
your fluid intake should be more. Pranayama, breathing exercise, meditation and yogasanas is a compulsion. Okay. um Now, application for external application, you have aloe vera, direct aloe vera gel, or there is specific oil called as karanja oil. That is the best. Okay. Now, neem cream is very good. How you can prepare neem cream? Take neem oil, add aloe vera gel to it, beat it very properly, like blend it very properly. Then you will have a creamy consistency, so that you can apply or at the affected areas. Or if at all there is excess dryness, then ghee, or your ghee is the best. अगर बहुत ज्यादा सूखा या फिर रूखा है, तो जो घी है वो बहुत अच्छा काम करता है. Okay, so these are some of the things what you can do. Now coming to diet and all, list of things have been given. Now coming to gastric troubles, acid reflux, pitta dosha is involved here. Pitta is very, very high, or it has become, and you have a lot of, burning sensation, ulcer, and stuff like that. Excessive eating in a fast, very fastly. If you're eating a lot fast, if you're worrying a lot, and if you are having a lot of spicy food, then in this case you will have a lot of gastritis, gastric reflex or gastric issues. Panchakarma here is Vamana, Virechan, Nasya is also very, very beneficial. Okay. जब आप पित्त आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाते हो, या फिर बहुत ज्यादा दुखी होके खाना खाते हो, फिर टेंशन में खाना खाते हो, या तो फिर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी, तीखा और मसालेदार खाना खाते हो, तो आपका गैस्ट्राइटिस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ओके. पंचकर्मा, वमन और विरेचन बहुत अच्छा काम करता है. At the same time, apart from this, best thing is buttermilk is very good. Then lassi is very good. Hot milk with ghee in it in the morning is very good. Apart from that, tender coconut water with इलायची in it. मतलब नारियल का पानी जो है उसमें इलायची डाल के आप अगर पी रहे हो, tender coconut water with cardamom in it, very, very beneficial. Overnight, coriander seeds, fennel seeds, and your raisins and figs. Okay, all these four, or you can add a bit of cinnamon also. Again, this water in the early morning will take care of your pitta or your this. Okay, and or just plain raisin water, black raisin water works wonders. Okay. Now, yes, you have a lot of this. Now coming to hypothyroidism. Hypothyroidism is again, metabolism or hormonal is all related to pitta. So when the pitta disbalance is there, then hypothyroidism occurs. It also, starts disturbing the kapha dosha. So there's a lot of, disturbance, or you could say, with the doshas, with the dhatus or the tissues and the functioning. Okay, leading to hypothyroidism. Okay. Here panchakarma, we are giving Vamana, Virechana, Vasti and Nasya, very, very beneficial. Okay. Again, this will be taken care, or this will help in taking care of your thyroid problem. Nasya will take care of your hormonal disbalance, or stimulate the hormones and stuff like that. Okay. Some of the powders have been given. Yes, the best here is your exercise, workouts, yogas, and stuff. Apart from that, barley water with methi and barley water are very, very beneficial. Okay. Apart from that, your thyroid,
For thyroid, again, black raisins with figs, very beneficial. Okay, that helps in regulating. You can add a couple of methi seeds, that is your fenugreek seeds, to that the water, and drink it in the morning. Okay, रात को आप काले किशमिश, अंजीर और मेथी दाना डाल के पानी भिगो के और अगले सुबह वो पानी आप पी सकते हो. Nirupama ji, you can add both barley and methi together, no harm. Okay, but preferably take them separately. That would be very beneficial. Okay, now coming to PCOS, that is polycystic ovarian syndrome, wherein because of the vata and kapha vruddhi, there is blockage, or you could say there is obstruction to the ovaries, leading to multiple cysts in the ovaries. Okay, here because of vata or कफ और वात का डिस्टर्ब होने की वजह से कफ जो है वो बढ़ के जो ओवरीज है या फिर आपका अंडकोश है वहां पे वो ब्लॉक करता है, और वहीं पे जो अंड है, बहुत सारे अंड मिलके बहुत ज्यादा छोटे छोटे पानी भरे हुए अंडे बन जाते हैं, और इसको हम लोग अनार्तव करते हैं, अनार्तव बोलते हैं, जहाँ पे पीरियड्स नहीं आते, दर्द होता है या फिर फूल जाता है, infertility वगैरह होता है. When this happens, there's amenorrhea, irregular periods, painful periods, or infertility. Okay. Yes. Now, panchakarma, Vamana, Virechan, Uttara, Vasti, Nasya, very beneficial. You have some of the list of this. यहाँ पे in this अंजीर, kishmish, and saffron, strand of saffron. Okay, soaked water overnight and drink early morning, very beneficial. Okay, apart from that, exercise and stuff, yoga and exercise and all. Okay, जो अंजीर, काले किशमिश और केसर, इसका एक केसर का एक स्ट्रैंड आप डाल के पानी उसको सोखने दे सकते हो, और अगले दिन सुबह आप वो पानी पी सकते हो. इससे आपका पीसीओएस का जो है वो धीरे धीरे ठीक होता है. Then kashaya, in the decoction you can use jeera kashaya, that is cumin decoction, fennel seed decoction. Okay, you can take them sips every day. That will be very beneficial. Okay, you can add even your methi dana decoction. तो मेथी दाने का कषाय बना सकते हो, जीरा का कषाय बना सकते हो, फिर सौंफ का कषाय बना सकते हो. इन तीनों में से थोड़ा थोड़ा आप मतलब हर दिन कंज्यूम कर सकते हो, तो उससे भी पीसीओएस में बहुत ज्यादा फर्क दिखता है. ओके, अनुपमा जी, अंजीर किशमिश आप खा सकते हो, कोई दिक्कत. अंजीर और किशमिश, द फिग एंड द dried raisins which you have kept or soaked them, you can eat them and then drink the water, no harm in that. Okay, yes, now you have some of the this. Now coming to respiratory ailments, something called as, we have something called as upper respiratory tract and something called as lower respiratory tract. The throat, nose, all this come under upper respiratory tract, and in the chest area you have your lower respiratory tract. जो आपका गला है, गला और नाक वगैरह जो है, इसको हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, और जो सीना जो जहाँ पे आता है उसको हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं. ओके, वेरी कॉमनली बहुत आसानी से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है. वेरी कॉमनली यू कैन फाइंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, URTI. Very commonly sore throat, runny nose, cold, cough, asthma, breathlessness, bronchitis, COPD, like sinusitis, allergic, nasal polyps, deviated nasal septum. All these are commonly seen in upper respiratory tract, and these can be very easily corrected or treated or managed through Ayurveda. Very commonly vata and kapha are involved, and these are disturbed, especially prana vata or prana vayu, as we say, is highly disturbed. Okay, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पे ये सारी चीजें होती है. ओके, ब्रोंकियल अस्थमा, कफ, डिस्निया, ब्रोंकाइटिस वगैरह. कफ और वात डिस्टर्ब होता है, स्पेशली प्राण वात जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से
रेस्पिरेटरी इश्यूज शुरू हो जाते हैं। ओके, आयुर्वेद में इसको आप आसानी से करवा सकते हो। नस्य जो है सुबह जो कफज काल रहता है, स्पेसिफिकली वेरी पर्सनली, आई मीन लाइक वेरी प्रॉपरली or commonly you can see that the Nasya treatment is being given somewhere between 8-8:30 when the kapha is at its peak. ओके, मतलब कफ जो अपने बहुत पीक पे रहता है 8-8:30 बजे, उस टाइम पे आप नस्य करवाओगे तो बहुत अच्छा काम करता है। ओके, पंचकर्मा प्रोसीजर्स, नस्य, वमन, मसाज विद तिल ऑयल एंड सैंडल सॉल्ट, चेस्ट, स्टीम इनहेलेशन, गार्गल्स, धूमपान, some of the herbs have been given. Okay, now some of the things what you can do is for the nasya or the nasal respiratory infection अगर हो रहा है तो very commonly एक तो है diffuser market, in market you will get diffusers of electric diffusers, or at home you can prepare your own diffusers with candle and all. Just bhimseni kapoor with eucalyptus oil, put it in the diffuser and leave it. It will be very, very beneficial. You can use this system or this method even in the newborn babies. Very, very beneficial. Instant, those nose blockages, yeah, stuffy nose and all will be taken care of. If at all you want to fumigate the whole room, then what you can do, take some a pan or something, put your charcoals, lighted charcoals in that, and to this you add your benzoin resin. Okay, benzoin resin is it can be loban or your sambrani. Okay, something जो जिसमें धूप हम लोग डालते हैं बहुत ज्यादा, मंदिर, मस्जिद, दरगाह में वो धूप जो डालते हैं, जो ये करते हैं, वो आप उसमें आप वो आप ले लो, वो आप डालो, उसमें थोड़ा सा हल्दी आप डाल सकते हो। यू कैन ऐड, now to this you can add eucalyptus oil or kapoor, bhimseni kapoor. Whenever I am telling kapoor, it is the pure kapoor, pure camphor. Okay, not your mandir ka camphor, the which you are using for your pujas, not that. There is something called as pure camphor which can also be consumed. Okay, that camphor you have to use. And to this you can add again garlic, garlic peelings, मतलब लहसुन के जो छिलके आते हैं वो आप ऐड कर सकते हो, so that will help in fumigating the whole of the room. Okay, and acts as a very good disinfectant and diffuser. Now this is the external. Now in application, external application, you can always apply dry shunti paste, मतलब जो सौंठ रहता है, okay, उसको घिस के उसका पेस्ट आप गले पे, गर्दन पे, सर पे, गले पे, सीने पे और पीछे बैक पे आप लगा सकते हो. यू कैन अप्लाई द ड्राई जिंजर पेस्ट टू योर फोरहेड, टू योर थ्रोट, टू योर चेस्ट एंड टू योर बैक. ओके, एंड देन यू कैन टेक हॉट स्टीम. इसके बाद आप हॉट स्टीम ले सकते हो. इसके अलावा till oil, your sesame oil, to that you can add sendav lavan, that is your rock salt. Mix it, apply at the same areas, and then take steam. Very, very beneficial. At the same time, you can also use kapoor, that is your camphor, pure camphor. That also you can mix it in the oil, and then you can apply it in all these areas and then take steam. Okay, very, very beneficial. Internally, you can take ajwain leaves. Okay, ajwain leaves, that is caraway seed leaves. Just slightly saute it on a pan and then take juice out of this, put it in a cloth and squeeze it, so you will get a juice out of this. Again with the tulsi, same with the tulsi, take juice out of it, and to this juice you can add honey and then make it give it to to drink, not only to the elders but also in the kids also. Very, very beneficial for cold, cough and internal phlegm and all. Apart from that, dry dates and shunt, that is your dry ginger and dry dates, rub it on the stone and make a paste out of it, and to this paste add it to the honey and give it, or just tulsi swaras or tulsi juice. Very, very beneficial.
Okay, apart from that, a special kadha you can make with tulsi, ginger, black pepper, clove, cardamom, your black raisins, lemongrass. Okay, you put all this, boil it, decrease it to one glass. If your water is taking, you're taking, decrease it to half a glass, and then take sips of it. Very, very beneficial. Okay, so this completes your topic. Any questions? Yes, Sulochana ji. मैम मेरे को ये पूछना था कि जैसे 9-10 साल का कोई बच्चा हो और उसको जैसे एडिनॉइड्स होते हैं, आई थिंक उसको नेजल पॉलिप्स बोलते हैं। ये हमें जैसे रात को सोने के टाइम स्नोरिंग की आवाज आती है बहुत ज्यादा, और माउथ से ब्रीदिंग लेते हैं, तो उसमें हमको कौन से तेल का नस्य देना चाहिए? डिफ्यूजर आप यूज करो। एक तो पहले तो डिफ्यूजर आप यूज करो। ये थोड़ा सा मेडिकल कंडीशन है, तो इसको आप डॉक्टर से पहले अब दिखाओ, फिर उस हिसाब से ये करो। ठीक है? ओके मैम, ओके। यस, नैना जी। Yeah, ma'am. You told about the Raktamokshan, something. Raktamokshan. So, sorry, Raktamokshan. So, how you can, take out the impure blood? How it is decided? This is impure blood. You mean to say the jalauka or the syringe you're talking about? Syringe I'm talking about. Syringe, we don't segregate blood and impure blood. It is just because we are taking it from the artery, brachial arteries. So usually we take somewhere between roughly between 50 to 100 ml. Okay. And another thing I just want to ask that generally this young generation girls, they have irregular periods, and they have painful periods kind of the thing. So any home remedies for them, ma'am? The same. For PCOS, I told you the same thing. The same thing they can take. Yeah. Yes. Okay. Yes. Thank you. Yeah. Yes, Ujma ji. हेलो मैम। हेलो मैम, आपने बताया मैं एसिडिक प्रॉब्लम के लिए, पित्त प्रकृति के लिए 1 ग्लास हॉट वाटर अर्ली मॉर्निंग विथ घी। तो अगर मतलब हम मेरी डाइट के हिसाब से जो मुझे फैट लेना है वो मैं ले रही हूँ, तो ये एक्स्ट्रा होगा तो फिर वेट गेन का इशू नहीं होगा? इससे वेट गेन तो नहीं होता है। वो हम एक्स्ट्रा मतलब घी लेके तो फैट एक्स्ट्रा ही होगा ना फिर? हम लोग तो आयुर्वेद के हिसाब से कर रहे हैं। डेली आपको कंपलसरी घी 30 ml तो लेना ही है। ओके, आयुर्वेद की। ओके मैम, नेक्स्ट मुझे पूछना है, जैसे हम ये रक्त मुक्ता जो है, मतलब कपिंग थेरेपी होगा? नहीं, ब्लड लेटिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी अलग है, ब्लड लेटिंग अलग है। कपिंग में आप खून को नहीं निकालते हो, वैक्यूम क्रिएट करके वो एरिया को ये करते हो, कैपिलरीज को ब्रेक करते हो। लेकिन ब्लड लेटिंग हम लोग डायरेक्टली वेन आर्टरीज में डाल के निकालते हैं। या ओके, थैंक यू। यस, निर्वे जी। हेलो मैम। अच्छा मैम, ये हाइपोथायराइडिज्म पंचकर्मा से मतलब रेगुलर जब हम करवाते हैं तो रिवर्स हो सकता है? जी, हो सकता है। और हाउ रेगुलरली वी शुड डू इट? After first thing, first session, they are putting you on the rasayan or stuff like that, and after that, based on that, at least yearly once we have to do. Yes. Okay. And also about varicose veins, I wanted to know. मतलब वो leeches का आपने बोला, that's the only way or there is any other? We have a lot of other क्या ways. कर सकते हैं मैम इसके हम लोग लिए? मसाज देते हैं, पोटली स्वेद देते हैं, परिसेक देते हैं। Okay. There are a lot of things. So it will completely become normal?
It takes time. It depends on how chronic it is and how bad it is. Okay. If at Okay. all the veins are calcified, then it becomes a bit difficult. Okay. But if the veins are not calcified, then it is a bit easy to reverse it back. ओके सो मैम ये कैसे पता चलता है, मतलब हाउ शुड वी गेट इट चेक, लाइक क्या करना चाहिए इसके लिए? उसके लिए डॉक्टर आपको बता देंगे वो they calcified हुआ है कि नहीं. they will find out and they will Yeah, let there us is know. something called as Doppler study. Okay, color Doppler Okay. study of the veins and arteries, and they Okay. do that, and after that they'll have an idea as to how much of calcification is there or no. Okay, because it's जो वेरिको वेन्स होते हैं वो पेनफुल नहीं है, बट यू नो इट्स होते जस्ट, बहुत ज्यादा होते हैं पेनफुल. हाँ नहीं मतलब सिचुएशन ऐसी है कि पेनफुल नहीं है, पर देर आर इट इज देयर, सो इसका मतलब इट इज नॉट इंटेंस, मतलब एकदम सीवियर नहीं है. ये मतलब है, अगर पेनफुल है तो देन विच मीन्स इट्स सीवियर, राइट? Not necessarily. It depends on which what it is pinching. You know, sometimes pain it is because some muscle is being pinched or the nerve is being pinched because of that bulging and all. So it depends. ओके ओके. एंड मैम वो नस्या आपने जो बोला था ना, किड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं नस्या, मतलब ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स? कौन से नेजल ड्रॉप्स? एक्चुअली इनका मतलब जनरल यू नो म्यूकस क्लीनिंग के लिए ऐसे कुछ कर सकते हैं हम लोग नस्या यूज? आप नॉर्मल तिल का तेल आप डाल सकते हो, बट लेकिन बच्चे तेल वगैरह थोड़ा यू नो ये नहीं करेंगे, वही दिक्कत है बच्चों में. बट इन केस इफ दे टेक तो दे सकते हैं स्टीम ना? इज द बेस्ट. या हाँ, स्टीम इज द स्टीम इज द one बेस्ट. drop, one one drop drop. sesame oil, right? Yeah. Okay, thank you so much, ma'am. Yeah. Pallavi ji. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, my one question is we studied about hypothyroidism. So, isn't there any cure for hyperthyroidism from Ayurveda? For hyperthyroidism, also the same panchakarma treatments are being given. Okay. And only thing is the medications and all will be different. But it is there, no? Because yes, we read only hypothyroidism. Yes. Okay. No. Another thing is, ma'am, you told for migraine ice pack at the back of the head. Yeah, that's I had to show Yeah. where your head ends. Your Yes, head ends here and your neck starts. Okay. So Yes, जब ma'am. आपका सर खत्म होता है और आपका जो neck शुरू होता है, there is a depression. There is a kind of depression. So that is the marma point on which you can give a gentle, you know, circular massage like this with your thumb. Okay, and then you can keep the ice pack. And it can be taken during cold weather as well. Yes. It does, maybe. But yeah, but see, sometimes it so happens that for some people it is because of the cold, Yeah. In that case this will increase. If you keep this is then what. Yes, ma'am. So in that case, warm water bottle will work, or it is not? You have to check. Okay. Another thing is, Kunjal is a kind of Vamana. Kunjal, like drinking water and taking. No. It is different. It is a type of Vamana, but it is not panchakarma Vamana or not Shodhana. It's not. Okay. Yeah, it is not Shodhana kind of. Okay. Thanks, ma'am. Yeah. Yes, Ujjwala ji. उज्ज्वला जी. हेलो. हाँ जी. मैम, पीसीओएस एंड पीसीओडी में क्या फर्क है? दोनों एक ही है. एक ही है ना? जी. पीसीओएस मतलब सिंड्रोम, जहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं. डिसीज इज अगेन a group of, that's it. There's no much difference. They are both one and the same only. Okay, thank you. Yes, Kiran ji. मैडम गैस्ट्राइटिस के लिए क्या है मैडम, बहुत मुंह से ज्यादा गैस निकलता है.
मुंह से ज्यादा मुंह वो मैंने ऑलरेडी गैस्ट्राइटिस में आप क्या क्या कर सकते हो वो बताया है ना। हाँ मैडम, बटर मिल्क डेली लेने से कम होता है। बटर मिल्क आप ले सकते और हो और बहुत सारी चीजें बोली है, तो आप वापस से थोड़ा सा वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपको फिर आप वो फॉलो कर सकते हो। नहीं मैडम, लेमन हॉट वाटर में लेमन पे ये करके वो नहीं कर नहीं ले सकते मॉर्निंग। नहीं नहीं जीरा जीरा हॉट वाटर में जो वाटर में जीरा डाल के बॉईल करके पीने का ही। नहीं इज इट करेक्ट? नहीं नो। ओके, थैंक यू। यस, संजीत कौर। यस मैम। हाँ जी मैम, आपने ये जो स्किन प्रॉब्लम्स के जो ये बताए हैं, ट्रीटमेंट्स बताए हैं, ये अर्टिकेरिया, एक्ने, इन सब में यूज हो जाएगा? जी अर्टिकेरिया भी? हाँ जी हाँ जी। ओके, और यही सेम हेयर प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज होगा? नहीं। ओके, दैट इज डिफरेंट। यस। ओके, थैंक यू। Okay, so I think we'll end the class here. Yeah, meet you tomorrow.